Hello students, good evening to all of you. Today we will study the another method of calculation of concentration, that is the mass by volume percentage, that is the W by V. So let's see. This method basically used in the medicine and pharmacy. Used in medicine and pharmacy. Where it will be used? Medicine and pharmacy, and it is the mass of solute in grams dissolved in 100 milliliter of solution. 100 milliliter of solution. Solute जो होगा, amount of solute dissolved in the 100 milliliter of solution. So let's see the formula. What formula we will use in this method? The mass volume percentage, that is the W by V, equal to mass of solute upon mass of solute in grams, mass of solute in gram upon volume of solution in milliliter into क्या करेंगे 100 कर देंगे. Why it is multiplied by 100? Because percentage निकालना है. Why it is called the W by V? Because mass of solute, मास किस में होता है? किसी सब्सटेंस का मास हो W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास को W से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम को V से, इसलिए W by V बोलते, क्योंकि मास को डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम से, तो बाय मीन्स डिवाइड, तो W by V बोलते हैं. नाउ सी, अगर कोई सोल्यूशन, if any solution is mentioned by, suppose that a solution is mentioned by 10% solution of sodium chloride, suppose that 10% solution of sodium chloride W by V. अगर कोई सोल्यूशन है, सपोज दैट, फॉर एग्जांपल ले लिया, कोई एग्जांपल ले लिया, सपोज दैट 10% ले लिया, 20% ले लिया, 25 कुछ भी ले लीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या डेटा चेंज हो जाएगा. सपोज दैट कोई सोल्यूशन है इन विच इट इज रिप्रेजेंटेड, अ सोल्यूशन इज देयर इन विच 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड W by W का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ sodium chloride dissolved in 100 milliliter of solution, क्या होगा? 10 gram of NaCl will dissolve in the 100 milliliter of the solution. So this is all about the mass by volume percentage, W by W. So thank you class, have a good day. Hope you got the concept.